1,100 was allocated. Out of that, 500 was allocated for old city. Sir, in all these years, allocations were made, but not a single paisa was released. हाँ, ये अलग बात है कि L&T के losses के लिए पैसा दिया गया था. Sir, they released the amount for the losses of L&T, sir, but the amount was never released for the old city, sir. Sir, now also, sir, 24, 25, 1,100, in this 500 is for old city, sir, 100 for airport, sir, फिर वो survey 100 HMR के लिए दिए. Sir, now my question, sir. Sir, everybody, we had a foundation stone ceremony, sir. Honorable CM Saab had laid the foundation. I thank him very much for laying of the foundation, sir. It is a welcome move. But the question which needs to be answered is, who is going to execute the work? Who has been allotted with the work? Who has been asked to complete the work? Who has been asked to collect the ticket amount after laying of that corridor? Who is going to maintain that line? None? No? My friends from Congress were upset and angry also. Mr. Akbar, you never attended the Old City Foundation Stone. Yes, I say now. I say now. I didn't attend. The reason behind is that there was no agency which was given the contract to execute this work. This is how you lay the foundations? Without a tender being called, without a contract being given, without an agency has been given the responsibility of the work, you have to just lay the foundations? Is this justice? क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है पुराने शहर के साथ? फाउंडेशन स्टोन रख दिए, कॉन्ट्रैक्टर का आता है ना पता है. L&T says कि whatever amount was given to me was approved for the corridors. I have already spent that amount. I do not have the amount. I am not going to execute the old city corridor. So the question arises कि who is going to execute the old city corridor? Why has the foundation been laid? Why has it been laid? कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा? सर, ये सही नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि this will be corrected and immediately Old City Metro corridor work is going to start. Sir, it is very sad, sir. Sir, I welcome, sir. We understand that the Hyderabad Metro Train has declined to fulfill the obligation of laying the Old City line for corridor from Imliman to Falaknuma, sir. But at the same time, sir, we welcome that Honorable Chief Minister Sahab had said that Chandran Gutta will be made a hub and airport se aa raha hai, sab aa raha hai. BRS ne bhi hamare saath nainsafi ki. हमारे साथ इंसाफ नहीं किया. बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो हाँ ला लेंगे, रेल के छुक चलेगी. KTR साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हाँ अकबर साहब छुक चलेगी. आपके पास ना छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है. सर, पूरे शहर में चल रही. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू कम ऑन दिस रिकॉर्ड एंड से दिस, सर. इफ आई एम रॉन्ग, सर, I would say that I may be suspended from this house, sir. When did the metro came? How did the metro came to Hyderabad? Sir, it was me, sir. I stood and I argued and I debated and I fought for metro, sir. Sir, I remember the late legislator, Mr. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA. He used to stand and he used to say, "Nahi Akbar Saab, metro nahi, mono hona." So I and Janardhan Reddy used to fight. Mono metro. I remember Rashekar Reddy Saab, he stood up and he said, Akbar will do one thing, we'll go to Delhi, we'll see the metro. You are saying the metro is very good? Yes, we'll do it. Satyam tha saab, Satyam ko diya gaya tha Maitas, ulta Satyam ka Maitas. फिर वो सत्यम डूब गया, Maitas से चला गया. Rashekar Reddy Saab, we with the delegation went to Delhi, sir. We saw the metro और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया. मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है. इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होना है, सर? ठीक है, हमको नहीं दिए ना. हम पैदल चलते थे, पैदल चलने में ही खुश है. हम साइकिल पे थे, साइकिल में ही खुश है. हम रक्शे में थे, हम रक्शे में ही खुश है. मगर
मगर पुराने शहर के लोग मुंतजिर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो, प्लीज मेट्रो को लाइए सर। सर रीजनल रिंग रोड सर has a component of 158.6 kilometer northern road and 189 southern kilometer road, which makes almost 350 kilometers ring road sir. Sir, ये ring road के बारे में भी पूरा northern part will cost 13,522 crores and southern part will cost 12,980 crores and the total outlay of works is 26,002 sir. Sir, about this going further ahead sir, मैं हैदराबाद के ताल्लुक से ये भी बोलूंगा सर कि हैदराबाद में CPP, sir, when Mr. Suresh Reddy was the speaker, sir, I still remember, I said, Suresh Reddy sahab, I was in my 20s. Now, then I said, I am in my, almost in my 40s. इतने साल से बोल रहा हूं, sir, चारमीनार pedestrianization का project, चारमीनार. तो he said, अकबर साहब, खुशखबरी है, अब चारमीनार बदलेगा, पेडिस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट होगा। 10 साल हथेली में जन्नत दिखाते रहे BRS, आ जाएगा। चारमीनार पेडिस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट नहीं हुआ सर। उस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब, किरण कुमार रेड्डी साहब, रोशैया साहब, सब साहब बोले सर, नो अकबर, यंग मैन, आई रिमेंबर रोशैया साहब टेलिंग मी, यंग मैन डोंट वरी, यंग मैन डोंट वरी, Charminar pedestrianization will be completed. I am assuring you, young man. I said, sir, I respect you, sir. Sir, तो अभी भी सर बजट में चारमीनार पेडिस्ट्रियनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चारमीनार पेडिस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट करिए। सर, इट इज सच अ ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल, designs are there, sir. Sir, I have visited various cities in the world, sir. Various cities, sir. Sir, I have been to Milan, sir. The fashion street of Milan resembles the same architecture of Pathargatti, sir. Why can't we restore our heritage and protect the heritage, sir? What is wrong in that, sir? Sir, I had proposed, a tramp also, sir. I spoken to a France company. They came, they met Mr. KTR Saab also when he was a Minister for Municipal Administration to run a tram from Naya Pul to Charminar, in the median which is there in Charminar. People think we do not want the old city to have development. No, we want the old city to develop, sir. But it is so unfortunate that let be any government, they do not want to improve the living standards of the people of old city. They do not want to improve, but at the same time, they call us, हमको चोर बोलते हैं, लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं हैं, ना चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है? लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर। आई हैव ऑल द डिटेल्स, आई हैव ऑल द डिटेल्स सर। आई विल हैव अ डिबेट इन द डिमांड ऑन पावर सर, बट सेइंग दैट कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को। क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोडंगल को नहीं दिया जाएगा? क्यों उत्तम कुमार रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा? क्यों श्रीधर बाबी के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं? ओल्ड सिटी नहीं, इनको चुबाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेडिस्ट्रियनाइजेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बागयाम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए। अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए। सर, देयर आर मेनी इश्यूज सर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC सर। The major problem the residents of Hyderabad are facing as of now is a traffic jam, sir. What is the speed, sir? What is the speed a vehicle is moving, sir? What are the kilometers that we are covering in an hour, sir? Alternate roads. Sir, these people, they developed only Gachibowli and that area. They never developed old city, sir. पूरा हजारों रुपया वहीं डाले। सर, SNDP, SRDP, सर इसमें भी नाला डेवलपमेंट आया था,
हमने फ्लाईओवर्स का दिया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हाफिज बाबा नगर में बल्लागुड़े में फ्लाईओवर जब दियो बोलते केटीआर साहब बोलते थे अकबर भाई दे देंगे आपको, दे दिए जियो हो गया भाई काम, बोले नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। होते होते साहब अब मैं बूढ़ा होने आ गया, सब वाइट बाल हो रहे हैं सर अब सर एटलीस्ट सर आई एक्सपेक्ट दैट Revanth Reddy Saab, who's a very good friend of mine. Yes, I want to come on record. Yes, I want to come on record. Yes. He's a very good friend of mine. Not now. Not now. It goes back to some 35, 40 years back. We are very good friends. Yes, we are very good friends. And my friendship will be there with him. Personal level, but at the same time, as the leader of MIM and he being the leader of the house, I am going to do my responsibility, and I am sure he will also do his responsibilities. By hearing to me, by listening to me, by accepting the criticism and trying to do the work which has not been done from so many long years. Yes, sir. I hope that, sir. Sir, going further ahead, sir, about Dalit Bandhu के checks दिए हैं, sir. मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा दलित बंधु का दीजिए सर। सर ट्राइबल वेलफेयर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माय लर्नड फ्रेंड मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब इज ऑल्सो देयर। सर, आई जस्ट रीड आउट वन थिंग एंड देन आई विल से दैट सर। सर, the Dalit Bandhu scheme was virtually put on hold after Congress government came to power. Sir, lakhs of applications were there. It was stopped in 23-24 financial year. BRS government has allotted 17,700 crores for Dalit Bandhu as against the previous year expenditure of rupees 2,000 crores. However, not a single rupee was given for this sir. Sir, ये इसके बारे में हो गया sir. Tribal welfare, SC, ST, SDF sir. So the state budget 24-25, Bhatti Saab has allocated 33,124 crores for SC, SDF and 17,056 crores for ST, SDF, totaling rupees 50,180 crores, which is really a massive amount. Which is really.